Assalamu alaikum, dear students. Go to your book, page number 23, chapter The Old Brown Horse. First of all, I'm going to read this poem and then I'm going to tell you difficult words. The Old Brown Horse. The old brown horse looks over the fence in a very sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind." As they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him. But his master rides a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be and of all the times they had. Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sign as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once a young and as full of life as you. He loved the touch of your soft young hand, and I know he'll seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought, for a horse who has had his day." Now, students, I'm gonna tell you the difficult words and expressions. Please note down. Words to know or expressions to know. Had my day. My best days are past. I am old now. Mane, long hair on the head and neck of a horse. Like this, as you see in the picture. Mane. Topmost bar. Top bar of the gate in the fence. As you see here in the picture, this is topmost bar. Okay, very tired. Fence, bar. Seams, नजर आना. Dashing past, पास से तेजी से गुजर जाना. Lame, लंगड़ा या माजूर. Half blind, कम नजर आना. Shaggy coat. Long hair of horse which are on his neck, जो उलझे हुए हों उन बालों को शेगी कोट कहते हैं. Fond of him, शौकीन. Soul, रूह. टॉप मोस्ट बार, जैसे मैंने बताया, बार की सबसे ऊपर वाली लकड़ी. Mane is the same thing, long hair on the head or the neck of a horse. Now I am going to explain this poem in Urdu. इस नज़म में शायर जानवरों से शफ़क़त से पेश आने पर ज़ोर दे रहे हैं और एक घोड़े की पुरानी यादें घोड़े की ज़बानी सुना रहे हैं.
कि घोड़ा अपनी माजी को याद करते हुए सोच रहा है कि जब वो जवान था तो पहाड़ों पर बहुत तेज़ी से भागता था, लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो गया है तो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। अब वो पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं रहा। अब उसके खूबसूरत बाल लंबे और उलझे हुए हो गए हैं। इसका शौकीन मिजाज मालिक इसके बजाय कार में सफ़र करता है, जिसे देखकर वो बहुत उदास होता है। कभी कभार कोई उसके पास रुककर उसे प्यार करता है, जिसका वो बुरा नहीं मनाता। तो आपका कभी भी किसी ऐसे घोड़े के पास से गुज़र हो तो उसकी गर्दन पर शफ़क़त से हाथ फेरें और यकीनन वो कहेगा, शुक्रिया दोस्त, आपने इस घोड़े के बारे में सोचा जो अपना वक्त गुजार चुका है। आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी, मेंशन डेट, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, मेंशन चैप्टर नेम, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। Draw 3 columns. Words, English meaning, Urdu meaning. First word is trim, cutting from sides, कोनों से कटा हुआ. Trot, move faster than walk, तेज चलना. Weary, exhausted, tired, थका हुआ. Sigh, take deep breath, आह भरना, सांस लेना. Had my day, actions in past, माजी के वाक़े. Mane, neck of a horse, घोड़े की गर्दन. Open your book, page number 24, exercise A. Answer the following question. Note down question A in English text copy. What do we learn about the horse from his appearance and behavior? Answer is, we learn that the horse is very old, shaggy, not very well cared for, and a bit sad, but the horse respond to human touch. घोड़े को देखकर और इसके तौर तरीके से हमें क्या महसूस होता है? घोड़े को देखकर और इसके तौर तरीके से हमें पता चलता है कि घोड़ा थका हुआ, बूढ़ा और उदास है, लेकिन जब कोई उसे टच करता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है. Note down question number C. When does the horse feel that life now is not so bad? Answer is, The horse feels good when a passerby strokes its mane and shaggy coat. घोड़े को कब पता चलता है कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है? घोड़े को जब अच्छा लगता है जब कोई राहगीर उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरता है. Note down question number D. Why is the horse no longer used for riding? Give at least 2 reasons. The horse is old, time has passed and brought new methods of transport such as the motor car. कोई ऐसी 2 वजूहात बताएं जिसकी वजह से घोड़े पर सवारी नहीं की जा सकती. घोड़ा अब बूढ़ा हो गया है और अब सवारी के लिए मोटर गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं. Note down question number F. What would you have done to make the horses last year comfortable? Answer is, we would have taken good care of it and go to see it every day. अगर ये घोड़े का आखिरी साल होता तो आप इसको अच्छा महसूस करवाने के लिए क्या करते? अगर ये घोड़े का आखिरी साल होता तो हम इसकी देखभाल करते और शफ़क़त से रोज़ाना उसे प्यार करते.
All these questions are in your book on page number 24. Exercise A, Part 2. Make these statements as true or false. The old horse is pleased with life. False. The old horse likes having visitors. True. People who drive past are interested in the horse. False. The horse does not like being touched. False. Do this exercise in your English text copy. Dear student, this is the end of today's lecture. Please complete your homework before next lecture.